वेलकम टू क्रिक एक्सप्रेस। एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की ताजा खबरें एंड आल्सो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। These news and highlights this time is brought to you by Meteor Hospital. Meteor Hospital is a hospital which is located very near to the metro station, walking distance from the Burjuman metro station. Or this hospital takes care of the family healthcare needs for everyone. 80055 is the number which you can contact in case you need an appointment in this hospital. Sare insurance cards, all major insurances are covered. This is a multi-speciality hospital with a stellar reputation in Dubai. And today we have with us Pratika Kamath. She is joining us today on the Crick Express. She is an enthusiast about cricket. All of us are enthusiasts of cricket here, or usi tarah Pratika also loves to talk about cricket. She has a lot of questions. काफी सवाल ये पूछती हैं मेरे से. Even before the episode started, she was firing away all the questions. So मुझे लगा कि थोड़ा रुक जाएं, होल्ड करें, और जब हम एपिसोड शुरू करेंगे उस टाइम पे अपने सवाल पूछें. सो प्रतीक, आप पूछिए, क्या सवाल है आपका? Awesome. Thank you, Vivek. Okay. तो पहला सवाल मेरा सबसे पहले है कि I have heard about this series called Ashes and उसके राइट. behind बहुत fascinating history है. तो क्या आप मुझे या. बता सकते हैं कि what is the story behind it? Yes, so this is Ashes is something which a lot of people don't know. This is actually has a fascinating story. In the year 1882, England and Australia, 1882, हाँ, not 1982, Oh my 1882, हाँ, ग्रेट 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 हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे एक मैच हुआ था which was played between England and Australia. This was played at the Oval in England, और इस मैच में इंग्लैंड हार गया. After England lost badly to Australia, the next day there was an obituary. Obituary, आपको मालूम है, it's like, somebody dies and then they publish this in the newspaper. Okay, this person died here, this to this, this person lived and died. तो एक obituary publish हुआ न्यूज़पेपर में, और वो obituary था इंग्लिश क्रिकेट के बारे में. That English cricket is now dead, rest in peace, और आपका क्रिकेट अब खत्म हो चुका है, और आपको इंग्लिश क्रिकेट will be cremated and the ashes will be taken to Australia. So this was like a humor, maybe some fan like me and you, किसी ने मजाक में ये कर दिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया. तो उस टाइम पे व्हाट्सएप और ये सब नहीं होते थे ना, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में डाल दिया. So that is what happened in 1882. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड खेलने के लिए गया. So when England went to Australia, there was a group of women, these women who were, again, they were funny, humorous kind of women. तो उन्होंने भी मजाक मजाक में क्रिकेट की जो बेल्स होती है, बेल्स, देयर स्टंप्स के ऊपर एक बेल्स लगी होती है, तो एक वो God. बेल को लेकर उसको जला दिया, और उसकी एक एशेज बना के एक छोटे से कप में डाल दिया, और बोला इंग्लिश प्लेयर्स को कि देखिए ये हैं आपकी एशेज, जो आपकी क्रिकेट मर गई थी उसके. अगर आपको ये वापस लेके जानी है इंग्लैंड, तो आप यहाँ पर आए हैं, आप मैच जीतिए, आप ये सीरीज जीतिए. इफ यू विन दिस सीरीज यू कैन टेक दिस एशेज बैक टू इंग्लैंड. सो दैट इज व्हाट दे डिड, एंड इंग्लैंड वन दैट एशेज सीरीज. वो पहली सीरीज उसको बोल सकते हैं कि एशेज के लिए वो सीरीज थी. 2-1 इंग्लैंड ने जीत ली, एंड दे टुक दैट कप ऑफ दैट एशेज बैक टू इंग्लैंड. वो कप आज भी लॉर्ड्स ग्राउंड के जो म्यूजियम है वहां पे पड़ा हुआ है, द ओरिजिनल कप. So that original cup is still there, but these guys now play for a replica. एक replica उन्होंने बना दिया है. उसके लिए ये हर 2 साल में they play 5 test matches की series against each other, and whoever wins the series takes that cup and takes that ashes back home. It's a very keenly contested series, और बहुत सारे fans हैं इस series के. इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में there is intense rivalry between these two teams, और यही series अभी आजकल भी चल रही है. इंग्लैंड में this time the series is going on. Who do you think will win? Well, I think अभी तक, if you ask me, 4 मैचेस हुए हैं. 4 मैचेस हैं, टेस्ट मैचेस, जिसमें से 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है. ऑस्ट्रेलिया हैज वन 2, इंग्लैंड हैज वन 1 गेम, एंड द लास्ट गेम जो फोर्थ मैच था, दैट वाज अ ड्रॉ बिकॉज देयर वाज सम रेन towards the end. England was in a good position, but there was rain and the match ended in a draw. These 5-day matches can end in a draw as well. तो ये सीरीज अभी 2-1 पे है after 4 games. The fifth game starting tomorrow is going to be the decider. If Australia wins the game, they will end up winning 3-1. If Australia lose the game, then Ashes will be a tie. 2-2, both the teams would have won. If it's a draw, then Australia will still win the Ashes 2-1. So it's तो it's ये a है. it's another series that was just born out of ego, basically. Yes, it is another series. This is not out of ego. I I would say almost this. got Lagan vibes. I was just like, ये तो बिल्कुल 1882.
लगान की Yeah. पार्ट 2 बन सकती है इस पे। This is before Lagan. Yes, this is the Lagan between the England and Australia teams. And I would say, and it's also humor, because it's also somebody humorously put that obituary for English या team. And then unko उस ego टाइम aa का gaya बहुत टफ Australia. फॉरवर्ड था। Yeah, I know. So this is how it is. So cricket has a lot of stories, Pratika, many, many stories. So this is one fascinating thing. And this has been going on like for centuries now, right? So it's been going on for such a long time. तो ये है एशेज और की. के क्या हाइलाइट्स है, लाइक एनी मेमोरेबल मोमेंट्स फ्रॉम दिस टाइम? Okay, this time has actually many memorable highlights. The most memorable for me was the second test match जो लॉर्ड्स में हुआ था. उसमें बहुत सारे कारनामे हुए. तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें. एक तो उसमें एक ऑरेंज पाउडर लेके स्ट्रीकर, आप समझते हैं स्ट्रीकर होते हैं जो दे विल जस्ट रन इनटू द ग्राउंड, वन ऑफ द ऑडियंस, वो कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं पहनते, ऐसे आ जाते हैं ग्राउंड में बर्थडे सूट में, और वो ऑरेंज कलर का पाउडर लेके ग्राउंड में घुस गया एक स्ट्रीकर. सो समटाइम्स दे वेयर क्लोथ, समटाइम्स दे डोंट, समटाइम्स दे वेयर लेस, व्हाटएवर. सो वन गाय, आई थिंक कपल ऑफ गाइज, वो एक ऑरेंज पाउडर को उड़ाते हुए, बिकॉज वो they were protesting against no oil, so they're protesting against some environmental oil and all that, right? दैट्स So they हैपनिंग came in. एवरीवेयर। Yeah, so they came into the ground. और जब तक सिक्योरिटी वाला उनके पीछे भाग के उनको पकड़ता, तो एक को तो सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और लेके गया, दूसरे को जो जॉनी बेयरस्ट्रो हैं, इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं, उसी ने उठा के उसको बाहर तक लेके गया और सिक्योरिटी को वापस पकड़ाया. बट व्हाट हैपेंड वाज हिज क्लोथ्स बिकेम ऑरेंज बिकॉज ऑफ दैट होल पाउडर. देन ही हैड टू गो एंड चेंज द क्लोथ्स एंड कम, सो द मैच हैड टू बी स्टॉप्ड फॉर अ व्हाइल. सो दैट वाज वन इंसिडेंट. देन देयर वाज अनदर इंसिडेंट जहां पे जो लॉर्ड्स में देयर इज सेक्शन जहां पे एमसीसी एक है, मार्लीबोन क्रिकेट क्लब, उसके मेंबर्स के लिए वो रिजर्व्ड है वो सेक्शन फॉर दैट मेंबर्स ऑफ दैट क्लब. मोस्ट ऑफ देम आर ओल्डर पीपल, दे आर ऑल इन देयर 60s एंड 70s. तो उस सेक्शन में ये लोग बैठे थे और इनके जो ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां से गुजर रही थी, और इन लोगों ने काफी उनके बुरा भला कहा, काफी गाली वाली दे दिया ऑस्ट्रेलिया टीम को, एंड इट बिकेम अ कंट्रोवर्सी बिकॉज दे एक्टेड बिकॉज देयर वाज something that happened on the field, and the spectators were mad about it. So these guys became a little aggressive. As a result, MCC suspended the membership of many of these members. So this again was another incident in Ashes this time, which was memorable. And what happened was in the ground, again, Johnny Bairstow, he was involved in this. उनको एक तरीके से रन आउट किया या स्टंप आउट किया ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर कैरी ने, और वो जिस तरीके से किया, इट वाज नॉट इन द राइट स्पिरिट ऑफ द गेम अकॉर्डिंग टू द स्पेक्टेटर्स. रूल्स के हिसाब से तो आउट थे, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हिसाब से नहीं करना चाहिए था, ऐसा स्पेक्टेटर्स को लगा. तो इसलिए दे वर मैड अबाउट मेनी थिंग्स. सो दैट इज अनदर थिंग दैट हैपेंड. स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, इन लोगों के लिए काफी हूटिंग हुआ, क्राउड ने काफी बू किया है, काफी मेनी थिंग्स हैव बीन सेड अबाउट दिस. बोथ these players are from Australian teams, so they have been booed a lot for many things. So a lot of action happening in this, apart from some very good performances as well. English captain Ben Stokes has performed really well. For Australia, there have been a lot of good performances as well. Steve Smith has done well as well. तो सब लोगों ने perform भी किया. अच्छा contested series ये चल रहा है. Quite an interesting one. But these are some of the highlights. So yeah, a lot going on. I mean, this series has been looks like full of drama throughout Yeah, the yeah, yeah. century. Full of drama. Full of, this is better than any soap opera or any any Netflix season that you can watch. This is much better because it has so much drama and it's live, right? And Yeah, then commentators and presenters like us, हम लोग भी अपना मसाला डाल के थोड़ा और उसको spice up कर देते हैं ना. We also like to spice up things a little bit. exactly. And thinking of spice, thinking of India, India में क्या चल रहा है cricket wise? इंडिया में क्या चल रहा है, जैसा आपको पता होगा, इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज चल रही है. इंडिया तो फाइनल में हार गया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के. दे रीच द फाइनल एंड दे लॉस्ट द फाइनल. तो जो गुबार था, दे हैड टू समहाउ गेट rid of that frustration of that loss. So they went to West Indies because West Indies is currently, unfortunately, and I don't like saying it, but West Indies is currently one of the weaker teams, one of the most weaker teams in the international cricket. So West Indies चले गए उनको धोने के लिए कि चलो इनको हरा के हम कुछ अपना हार, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो हार है उसका कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालें. सो पहला मैच काफी बुरी तरह से वेस्ट इंडीज को हराया इंडिया ने. रोहित शर्मा गॉट अ सेंचुरी एज वेल, जो बहुत टाइम से रन नहीं बना रहे थे. एंड देयर वर गुड परफॉर्मेंसेस बाय रविचंद्रन अश्विन, एंड this was a good performance by India overall. There was one-sided game. They won it, hands down. Then there was a second match in which West Indies actually came back. They played well. It was an easier pitch to bat.
सो वेस्ट इंडीज ने अच्छी बैटिंग किया, अच्छे रन बनाए, एंड दिस वाज अ मैच व्हिच एंडेड इन अ ड्रॉ। तो ये मैच ड्रॉ हो गया। विराट कोहली ने हालांकि सेंचुरी बना ली, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बोथ ऑफ देम गॉट हंड्रेड्स। अनदर हाईलाइट वाज यशस्वी जायसवाल, ही इज अ न्यूकमर, उनका डेब्यू मैच था, ही मेड अ बिग 100 इन द डेब्यू मैच। So he's a youngster, 21-year-old boy, 21, 22 from Mumbai, plays for Mumbai, otherwise from UP. So he's done well for himself. And But he Ravichandran got Ashwin, 100. yes. You mentioned Huh? three players. Three players got 100. Yeah, three got 100. Ravichandran Ashwin played well. I think एक आधा किसी और का भी 100 हुआ होगा. I don't even remember. So a lot of people played really, really well. और बना लिए उन्होंने रन, और वेस्ट इंडीज का सेकंड मैच लेकिन ड्रॉ हो गया। वो मैच अगर इंडिया जीतती तो जो टेस्ट की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया वुड हैव continued to be at number one. However, this game India ended in a draw, so now India is not at number one, and guess Pakistan is now at number one in the test की जो रैंकिंग है ना, टेस्ट क्रिकेट के teams ka. So Pakistan is at number one, and they are playing a series as well currently. So wait, another ego match is coming up, I assume. India versus Pakistan. इंडिया पाकिस्तान होगा टेस्ट क्रिकेट। अभी तो आई थिंक एशिया कप और वर्ल्ड कप पे सबकी नजरें हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन वन ऑफ द एपिसोड्स विद यू। उसमें भी आपके सवालों के जवाब हम देंगे, बट दैट्स गोइंग टू हैपन एज वेल। दिस विल बी वो तो फिर कांटे की टक्कर है। दैट इज समथिंग दैट द होल वर्ल्ड वॉचेस, एवरीवन, ऑल ऑफ अस। कहीं नहीं होता है. It's the most dramatic one. Yes, it's the most dramatic one. Yes, and we remember those times when the games were played. Um, last game which India won, उसके पहले Pakistan had defeated India as well. तो Hmm. चलता It's रहता है ये, always but it's good. exactly. Yeah, Or back and forth. speaking of Pakistan, where is Pakistan playing right now? Pakistan and Sri Lanka are playing a series. उनका भी एक मैच अभी चल रहा है. It's still going on in the. This is the second test match. फर्स्ट टेस्ट मैच जो था वो पाकिस्तान ने जीत लिया था, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। सेकंड मैच में भी दे आर डूइंग वेल। अभी तक जो करंट न्यूज है, दे आर इन लीड, दे आर लीडिंग। श्रीलंका को 166 पे ऑल आउट कर दिया है सेकंड टेस्ट मैच में। सो दे आर रियली रियली डूइंग वेल, एंड दे आर टर्निंग इट ऑन, व्हिच इज ग्रेट, ग्रेट टू वॉच। दे हैव सम ग्रेट एक्साइटिंग क्रिकेट प्लेयर्स। तो एंड दे आर राइट नाउ एट द टॉप ऑफ द टेस्ट रैंकिंग्स। तो ये करंट जो है वो सिचुएशन है श्रीलंका एंड पाकिस्तान के सीरीज की। सही है. Lot going on, very exciting things. Which one is your favorite to Oh, watch? my favorite. Okay. In the series, current series? No, out of Ashes, India, West Indies, and Yeah. Pakistan. If you ask me, my favorite is Ashes. Because Because of the India West Indies, I mean, it's not that much of a contest, you know. Ashes is a very equal contest, and and as I said, it has a lot of drama and it has a lot of excitement around it, और बहुत सारी खबरें, news, ये वो बहुत कुछ होता रहता है वहाँ। So I follow Ashes as of now. I follow Hmm. all the cricket as well, and even India, Pakistan, India, West Indies, Pakistan, Sri Lanka as well. But जो ये Ashes है, वो I think that takes the cake. सही है, If you're सही है. not following Ashes, you should follow. कल I आखिरी मैच know. शुरू हो रहा है. Now that I know the story, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा. I have to know what's going on. Yes, yes, and you can even read up on this. And even for our viewers, if you want to know more about Ashes, आप जरूर जाके online check कर सकते हैं. You can even watch this episode from the beginning. शुरुआत में मैंने बताया है Ashes के history के बारे में. And you can also come and learn about it. Put in your comments, put in all that you want to say about Ashes or India or West Indies or Pakistan, Sri Lanka, whatever. आप कुछ भी है comment डालिए और follow कीजिए हमारा channel, and we will be here. Pratika is going to come back. We want to talk about more things, and we will keep the banter and the excitement going. Yeah. All right. So, एक बार फिर बता दूं, Meteor Hospital is the one that brought you this episode. This is a hospital which is near the Parjuman station. 80055 is the number to book an appointment. Every member of a family can have some service or the other. अगर कभी जरूरत पड़े तो सारे insurances यहाँ पर covered हैं. All major insurances are covered, and the Meteor Hospital is the place in case ever needed. So thank you very much, and till we meet again, we will stay tuned to our Crick Express channel as well, and we will be in touch through our social media channels.